Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Student, we were reading chapter 5, One and Many of our English language book Cornerstone. In our last video, our topic was one and many. So student, we have read about one and many in our last video, and included this topic we have read and solved exercise O and M, which is page number 21 in our English language book Cornerstone in our last video. And student, we have also read singular and plural noun. And students, we have also read and solved exercise A, which is page number 22 of this chapter 5 in our English language book Cornerstone in our last video. And students, today's our topic is some rules of change singular noun to plural noun. So students, today we will read some rule for change singular noun to plural noun, and included in this topic we will also read and solve exercise B, which is page number 22, and exercise C, which is page number 23 of this chapter 5 in our English language book Cornerstone in our today's class. Okay, so all students, please partial listener class and listen to my words clearly, because today we are going to read some rule of change singular noun to plural noun. Okay, so all students, let's see, look at the page number 22. Okay, लर्नर मीन्स सीखिए. लुक एट दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स. लुक एट मीन्स देखिए. दिस मीन्स इन. पेयर्स ऑफ वर्ड्स मीन्स फ्रेंड्स होता है जोड़ा या युग्म. ओके, ऑफ मीन्स का, वर्ड्स मीन्स शब्दों. पेयर्स ऑफ वर्ड्स मीन्स फ्रेंड्स होता है शब्दों का युग्म या शब्दों का जोड़ा. ओके, लुक एट दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स. इट्स मीन्स शब्दों के इस जोड़े को देखिए या शब्दों के इस युग्म को देखिए. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट पेयर्स ऑफ वर्ड्स. योर फर्स्ट पेयर्स ऑफ वर्ड्स इज bus, buses. Okay, bus means students bus, buses means buses. Okay, bus it's a singular noun and buses it's a plural noun. Okay, let's see second pairs of words. Your second pairs of words are church. Church means student गिरजाघर. Okay, so student जैसे हम जहाँ पे जिस प्लेस पे जाते हैं वर्शिप करने के लिए ना, तो हमारी वर्शिप प्लेस को जहाँ पे गॉड होते हैं हम प्रेयर करते हैं ना, तो हमारी वर्शिप प्लेस को बोला जाता है टेम्पल. टेम्पल मीन्स मंदिर. वैसे जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं ना, ईसाई लोग होते हैं ना, तो उनके जो वर्शिप प्लेस होता है जहाँ पे उनके गॉड होते हैं, तो उसे बोला जाता है चर्च. इट्स मीन होता है गिरजाघर. चर्च इट्स मीन गिरजाघर, इट्स अ सिंगुलर नाउन, एंड चर्च इट्स मीन गिरजाघर. ओके, इट्स अ प्लूरल नाउन. ओके, लेट्स सी थर्ड नंबर पेयर्स ऑफ वर्ड्स. और थर्ड नंबर पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर ब्रश, BRUSH. ब्रश मीन्स कूची एंड ब्रश इट्स मीन्स होता है कुचियाँ. क्लियर? ब्रश इट्स अ सिंगुलर नाउन एंड ब्रश इट्स अ प्लूरल नाउन. लेट्स सी फोर नंबर पेयर्स ऑफ वर्ड्स. फोर नंबर पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर ग्लास. ग्लास मीन्स होता है गिलास, इट्स मीन पानी पीने का बर्तन, एंड ग्लासेस. ग्लासेस मीन्स फ्रेंड्स होता है गिलास, इट्स मीन पानी पीने के बर्तन. क्लियर? ग्लास इट्स अ सिंगुलर नाउन. ओके, ओनली वन ग्लास आएगा इसके इंक्लूडेड. एंड ग्लास इट्स मीन होता है, इट्स अ प्लूरल नाउन. ये प्लूरल नाउन है, इट्स मीन होता है गिलास है. ओके, एंड इसमें पानी पीने का बर्तन होता है, और इसके इंक्लूडेड स्टूडेंट्स मोर देन वन ग्लास आएंगे. 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. ओके, तो ग्लास है, इट्स अ प्लूरल नाउन. क्लियर? लेट्स सी फाइव नंबर पेयर्स ऑफ वर्ड्स. फाइव नंबर पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर बॉक्स. बॉक्स मीन्स डिब्बा, एंड बॉक्सेस इट्स मीन डिब्बे. बॉक्स इट्स अ प्लूरल, सॉरी, बॉक्स इट्स अ सिंगुलर नाउन. ओके, बट बॉक्सेस इट्स अ प्लूरल नाउन. जो बॉक्सेस है BOXES, इट्स अ प्लूरल नाउन. ये आपका प्लूरल नाउन है. बॉक्स मीन्स हो गया डिब्बा, ओनली वन बॉक्स, ओनली वन डिब्बा. एंड बॉक्सेस मीन्स डिब्बे, इट्स अ प्लूरल नाउन. मोर देन वन बॉक्सेस के इंक्लूडेड आएंगे. 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. ओके, लेट्स सी सिक्स नंबर पेयर्स ऑफ वर्ड्स. पोटैटो, पोटैटोस. ओके, पोटैटो मीन्स स्टूडेंट्स potato means aloo, and potato it's a singular noun, and potatoes means aloo, and it's a plural noun. Potatoes it's a plural. Okay, so students, let's see nouns ending with S, CH, SH, SX, X and O form plurals by taking ES. Okay, so students, we can see that all this plural. Okay, जितने भी प्लूरल्स है इनके लास्ट में जैसे बसेस. ओके, लास्ट में जो लेटर्स है वो ES. ओके, ES ऐड किया है ना हमने सबके लास्ट में. और जो हमारे सिंगुलर वर्ड थे, ओके, जिनको हमने प्लूरल में चेंज किया है, तो उनके जो लास्ट लेटर थे वो थे S, SH, X, CH, S, ओके, O. तो स्टूडेंट्स, नाउन्स एंडिंग विथ S, CH, SH, SS, X एंड O फॉर्म प्लूरल्स बाय टेकिंग ES. ओके, इट्स मीन कि जो हमारे सिंगुलर नाउन है, ओके, जो हमारे नाउन्स है, संज्ञाएं हैं, जिनका एंड किससे हो रहा है, जिनका अंत हो रहा है S, CH, SH, SS, X एंड O. ओके, जिनका एंड इन लेटर्स से हो रहा है. ओके, तो उन्हें प्लूरल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ES ऐड कर देते हैं. ओके, तो इट्स मीन कि S, CH, SH, SS, X और O के साथ समाप्त होने वाली संज्ञाएं ES लेकर बहुवचन बनाती हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, ऐसे वर्ड जिनका लास्ट लेटर S हो, CH हो, SH हो, SS हो, X हो या O, तो हम क्या करते हैं, ऐसे अगर वर्ड्स में, अगर किसी वर्ड्स में ये लेटर्स आए ना, तो हम क्या करते हैं, उस वर्ड के एंड में ES को ऐड कर देते हैं, और ES को ऐड करके हम सिंगुलर टू प्लूरल चेंज कर सकते हैं. क्लियर? सो इट्स अ फर्स्ट रूल फॉर चेंज सिंगुलर टू प्लूरल नाउन. ओके, और रूल क्या है कि अगर हमारे कोई भी वर्ड का लास्ट लेटर का S, CH, SH, SS, X या O हो, तो हम उस वर्ड के एंड में ES को ऐड करके सिंगुलर टू प्लूरल चेंज कर लेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड फर्स्ट rule of change singular to plural noun. Now we are going to read and solve exercise B. Okay, so listen, let's say this exercise B. Your exercise B is
add es to these words to form plurals. Okay, it's mean इन शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए es जोड़िए. Okay, let's see first number word. Your first number word is gas. Okay, gas, gas. Gas means gas. Okay, so students add es in the end of this word gas, and then your plural become gases, gases, gases. Okay, so students, gas it's a singular word and gases it's a plural word. Let's see second number word. Your second number word is pass, pass, pass. Okay, so students, here the meaning of pass. Pass means students होते हैं घाटी. Okay, it's a singular word. And students, when we add es in the end of this word pass, then our plural become passes, passes. Passes means ghatiyan. Okay, and students, let's see third number word. Your third number word is fox, 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 and we can see that this word fox and with x letter, and we have read when our word and with x letter, then we can add es to change singular to plural नाउन. ओके, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए हम es को ऐड कर देते हैं अगर हमारा वर्ड का लास्ट लेटर x हो. ओके, तो स्टूडेंट्स ऐड es in the end of this given word fox, and then your plural become foxes, foxes. Foxes means lomriya. Fox means lomri, it's a singular word, and foxes means lomriya, it's a plural word. Clear? Let's see four number word. Your four number word is flash, flash. Flash means students होता है चमक. Okay, and it's a singular noun, and students, we can see that this word flash and with sh letters, and we have read that when a letter and with sh letters, then we can add es for change singular to plural noun. Okay, so students, add es in the end of this word flash, and then your plural become flashes, flashes. Okay, it's mean chamke. Clear? Flash it's a singular word and flash it's a plural word. Clear? So all students, turn your page forward, look at the page number 23, and let's see 5 number word of this exercise B. Or 5 number word is speech, peach. Okay, student, the meaning of peach means students होता है आडू. Okay, and it's a singular word. ये एक singular word है, and students, we can see that this word peach and with ch letter. Okay, so students, add es in the end of this word peach, and then your plural become peaches, peaches. Okay, adu. Okay, so peach it's a singular word, and peaches it's adu, it's a plural word. Let's see 6 number word. Your 6 number word is tomato. Tomato means tomato, and students, we can see this word and with o letter. So students, add es in the end of this given word tomato, and then your plural become tomatoes. Tomatoes means tomato. Okay, so tomato it's a singular word, but tomatoes it's a plural word. Clear? Let's say 7 number word. Your 7 number word is tax, tax. Tax means students, here the meaning of tax, tax mean होते हैं कर. Okay, it's a singular word, and students, add es in the end of this word tax. Okay, because this word tax and with x letter. Okay, so students, add es in the given word tax, and then your plural become taxes, taxes. Taxes means कर. Okay, and students, so tax it's a singular, but taxi it's a plural word. Let's see 8 number word. Your 8 number word is wish, wish. Wish means होता है इच्छा या तमन्ना. Okay, so we can see this word wish and with sh letter. So students, add es in the end of this given word wish, and then your plural word become wishes, wishes. Wishes means इच्छा या तमन्ना. Clear? Wish it's a singular word. Okay, and wish it's a plural word. Clear? Let's see 9 number word. Your 9 number word is witch, witch. Okay, students, which mean Diane या Rajshri. Okay, understand, we can see this word which and with ch letters. Okay, so add es in the given word which, and then your plural become witches. Witches means Diane या Rajshri. Okay, so stand witch it's a singular word, but witches it's a plural word. Clear? Let's see 10 number word. Your 10 number word is bunch, bunch. Bunch means students होता है गुच्छा, and it's a singular word, and students, we can see this word bunch and with ch letter. So students, add es in the end of the given word bunch, and then your plural become bunches. Okay, here the meaning of bunches means students होता है गुच्छे. Clear? Bunch it's a singular word, but bunches it's a plural word. Clear? Let's see 11 number word. Your 11 number word is class. Class means kacha, it's a singular word. So we can see the word class and with ss letters. Okay, so students, add es in the given word in the end of given word class, and then you plural become classes. Classes means kacha, it's a plural word. Let's see 12 number word, which is last word of this exercise B. Your 12 number word is dish. I said dish means students होता है थाली, it's a singular word, and students, we can see this word dish and with ss letter. So students, add es in the end of the given word dish, and then your plural become dishes. Dishes means thaliya. Clear? It's a plural word. So since we have solved this exercise B, and I hope you must have understood this exercise D, you have no problem in any word of this exercise D. Okay, so let's see now look at these pairs of words. It's mean अब इन शब्दों के जोड़ों को या अब इन शब्दों के युग्मों को देखिए. Okay, so let's see these pairs of words. Your first number pairs of words are life, leaves. Okay, life means जीवन. Okay, it's a singular word, and leaves, lives, leaves means
लीव्स मीन्स जिंदगी. ओके, तो स्टूडेंट्स लेट्स सी लाइफ इट्स योर singular word, but leaves it's your plural word. Let's see second pairs of words. Your second pairs of words are thief, thief. Thief means chore. Okay, and students thieves, thieves. Thieves means होता है चोर. Okay, तो students thief it's a singular word. Okay, only one thief होगा, एक चोर होगा. But thieves it mean हो गया चोरों बोल सकते हैं. Okay, it's a plural word. More than one thief इसके इंक्लूडेड आएंगे. क्लियर? थीव्स मीन्स हो गया चोर और ये आपका प्लूरल वर्ड है. दीज वर्ड्स डू नॉट फॉर्म द प्लूरल्स बाय एडिंग एस और ईएस. ओके, तो इस सेंस से जो दीज वर्ड्स मीन्स ये सब. ओके, दीज वर्ड्स डू नॉट फॉर्म द प्लूरल्स, ये प्लूरल में चेंज नहीं हो बाय एडिंग एस और ईएस. ओके, तो इट्स मीन कि ये सब एस या ईएस जोड़कर बहुवचन नहीं बनाते. ओके, एस या ईएस को ऐड करके हम इन्हें बहुवचन में चेंज नहीं कर सकते. ओके, ये सब एस या ईएस जोड़कर बहुवचन नहीं बनाते. ओके, तो स्टूडेंट्स exercise any circle the letters that have changed in the plural forms in the above pairs. What do you see? Okay, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, उपयुक्त युग्मों में बहुवचन रूप में परिवर्तित हुए अक्षरों पर गोला लगाइए. ओके, एंड व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं? तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, उन पर सर्कल करना है, उन लेटर्स पे सर्कल करना है. ओके, उपयुक्त युग्मों पे जो वर्ड्स के पेयर से युग्म है. ओके, तो उपयुक्त युग्मों पे बहुवचन रूप में परिवर्तित हुए अक्षरों पे गोला लगाइए. ओके, तो जो लेटर्स प्लूरल में चेंज हुए उन लेटर्स पे सर्कल करना है. ओके, तो नोटिस दैट द एफ और एफ ई एट द एंड हैज चेंज टू वी ई एस. तो लास्ट में हमारा जो स्टूडेंट्स हमारे जो वर्ड ऐसे लेटर्स कौन से हैं जो प्लूरल में चेंज हुए? हमारे लेटर्स है एफ ई. ओके, लाइफ में एफ ई चेंज हुआ है ना, एल आई एफ ई था, एल आई वी ई एस हो गया. तो स्टूडेंट्स एफ ई पे सर्कल कर लीजिए. ओके, सो स्टूडेंट ड्रॉ सर्कल अराउंड दिस लेटर्स एफ ई. ओके, इन दिस फर्स्ट नंबर पेयर्स ऑफ वर्ड्स लाइफ. ओके, एंड स्टूडेंट्स draw circle in this latter f in this second number pairs of words. तो आपका second number pairs of words है ना thieves, तो इसका जो first number word है thief, thief, thief है ना, तो स्टूडेंट जो इसका लास्ट वर्ड है thief वर्ड का. ओके, f इसमें सर्कल कर लीजिए, f में सर्कल कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा जो f था वही तो चेंज हुआ है ves में. thief था और f को हमने f को ड्रॉप करके हमने ves ऐड कर दिया, thives हो गया. ओके, सो स्टूडेंट सर्कल f letter in this first word life and circle around this letter f in this word thief. Clear? And notice that the f और fe at the end has changed to ves. Okay, it's mean ध्यान दीजिए कि f और fe अंत में ves में परिवर्तित होते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स इट्स मीन कि ध्यान दीजिए, नोटिस करिए, नोटिस दैट में ध्यान दीजिए कि दैट मीन्स कि एफ और एफ ई एट दी एंड. ओके, कि एफ और एफ ई लेटर्स जो है हमारे जो एफ ई अक्षर है वो लास्ट में एंड में हैज चेंज टू वी ई एस, वो वी ई एस में चेंज हो जाते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स लाइफ था एल आई एफ ई. ओके, तो एफ ई को ड्रॉप किया, एफ ई के प्लेस में क्या आ गया, वी ई एस हो गया, तो लाइफ हो गया. ओके, एंड स्टूडेंट्स ऐसे हमारा जो थीव वर्ड था टी एच आई ई एफ, थीव वर्ड था ना, तो एफ को ड्रॉप किया, एफ के प्लेस में क्या आ गया, वी ई एस आ गया, थीव्स हो गया. ओके, तो एफ प्लेस जो एफ का प्लेस चेंज हो गया, एफ के प्लेस में वी ई एस आ गया, और इधर एफ ई का प्लेस चेंज हो गया, एफ ई के प्लेस पे वी ई एस आ गया. क्लियर? So students, we have read this rule and we have solved this exercise. Okay, so all students circle कर लीजिएगा, है ना. फर्स्ट नंबर जो वर्ड है लाइफ, तो लाइफ में एफ ई लेटर्स पे सर्कल कर लीजिए. एंड जो सेकंड आपका पेयर्स ऑफ वर्ड्स था थीव और थीव, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है थीव, इस पे एफ पे सर्कल कर लीजिए. क्लियर? थीव जो वर्ड है ना टी एच आई ई एफ, तो लास्ट जो वर्ड है एफ, इस पे सर्कल करना है. क्लियर? लेट्स सी नाउ वी आर गोइंग टू रीड एंड सॉल्व एक्सरसाइज सी. तो ऑल स्टूडेंट्स लेट्स सी एक्सरसाइज सी. योर एक्सरसाइज सी इज चेंज दीज नाउन्स टू देयर प्लूरल फॉर्म्स. इट्स मीन कि इन संज्ञाओं को इनके बहुवचन रूप में परिवर्तित करिए. ओके, सो लेट्स सी योर फर्स्ट नंबर पिक्चर. इट्स अ वोल्फ. वोल्फ का पिक्चर है डब्ल्यू ओ एल एफ. वोल्फ मीन्स स्टूडेंट्स होता है भेड़िया. ओके, हियर द मीनिंग ऑफ वोल्फ. वोल्फ मीन्स होता है भेड़िया. एंड स्टूडेंट्स द प्लूरल फॉर्म ऑफ वोल्फ is wolves, wolves, wolves. Okay, and we can say in this picture that here are two wolves. Okay, more than one wolves है ना, इधर one wolf था, तो इट्स मीन हो गया भेड़िया. इट्स अ सिंगुलर वर्ड. ओके, जब हमने इसे प्लूरल में चेंज किया, लास्ट वी कैन सी दैट the last letter of this given word wolf is f. Okay, and we have read when our word and with the f letter when we can change singular to plural noun, ड्रॉप एफ एंड ऐड वी ई एस. ओके, तो हम क्या करेंगे, एफ को ड्रॉप कर देंगे, वी ई एस को ऐड कर दिया, तो हमारा स्टूडेंट्स प्लूरल बन गया वोल्फ का वोल्फ्स, डब्ल्यू ओ एल वी ई एस. ओके, एंड वी कैन सी इन दिस पिक्चर हियर आर टू वोल्फ्स. ओके, टू वोल्फ है ना, तो मोर देन वन है तो प्लूरल है हमारा. क्लियर? लेट्स सी सेकंड नंबर वर्ड. योर सेकंड नंबर वर्ड इज लोफ, एल ओ ए एफ. लोफ मीन स्टूडेंट्स होता है पाव रोटी. ओके, एंड स्टूडेंट्स वी कैन सी हियर आर ओनली वन लोफ. वन लोफ है ना, तो इट्स अ सिंगुलर वर्ड. ओके, सो स्टूडेंट्स वी कैन सी द लास्ट लेटर ऑफ दिस गिवन वर्ड लोफ इज एफ. ओके, एंड वी हैव रीड व्हेन आवर वर्ड and with f letter when we can change singular to plural noun
by drop f and add ves, okay, in place of f. तो हम f के प्लेस पर ves को ऐड करके f को ड्रॉप कर देते हैं, f को हटा देते हैं, और f के प्लेस पे हम ves ऐड करके सिंगुलर टू प्लूरल चेंज कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, ड्रॉप f and add ves, okay, and then your plural become of the given word loaf is loaves, loaves. Loaves means pav roti, and we can see in this picture here are two loaves and दो pav roti. Clear? It's a plural word. Let's say third number word. Your third number word is leaf, leaf. Leaf means patti, and it's a singular word है. And students, we can see the last letter of the given word leaf is f, and we have read whenever word and with f letter, then we can change singular to plural noun by drop f and add ves, okay, in the end of the given word. Okay, so students, drop f, okay, and add ves, and then your word become leaves, leaves. Leaves means patti, and we can see in this picture here two leaves. Okay, two leaves है ना, दो पत्ती है, तो leaves it's a plural word, ये आपका plural word है, more than one है. Okay, and let's see 4 number word, which is last word. Okay, elf, elf. So students, we can see the last letter of this word elf is f. Okay, and then we have read whenever word and with f letter, then we can change singular to plural noun by dropping f and add ves. Okay, जब हमारा कोई भी वर्ड अगर f लेटर से एंड होता है तो हम क्या करते हैं, f को ड्रॉप कर देते हैं, f को हटा देंगे और f के प्लेस पे ves को ऐड कर देंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, ड्रॉप f and add ves, okay, and then your plural of this given word elf become elves, elves, elves. So students, we have read and solved this exercise C, and I hope you must have understood this exercise C. You have no problem in any word of this exercise C. Okay, so students, today's classwork is that complete exercise B, which is page number 22, and complete exercise C, which is page number 23 of this chapter 5 in your English language book cornerstone, and send me a work here. And students, your homework is that learn exercise B and exercise C of this chapter 5 from your English language book cornerstone. It's a 2 days homework. Okay, आपका क्लास वर्क है कि आपको एक्सरसाइज बी जो आपकी पेज नंबर 22 पे है और एक्सरसाइज सी जो आपकी पेज नंबर 23 पे है, आपको अपनी बुक इंग्लिश लैंग्वेज की बुक कॉर्नरस्टोन पे कंप्लीट करना है. ओके, विद योर बेस्ट हैंड राइटिंग. इट्स अ टुडेज क्लास वर्क, एंड स्टूडेंट, योर होमवर्क इज दैट आपको एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज सी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक से लर्न करना है. क्लियर? एंड आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम फॉर लर्निंग वर्क बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन both exercise B and C. Okay, I have explained each word of both exercise B and C. Okay, so I think you have no problem for learning work. Okay, so all students, firstly complete your classwork, complete exercise B, which is page number 22, and complete exercise C, which is page number 23 of this chapter 5 in your English language book cornerstone, and send me a work here. Thank you.